My dear students, I am going to take fourth part of ninth class chapter first science, the state of matters. There are three state of matters: solid, liquid and gas. In second part I have taken the properties of solid. In the third part I have taken the properties of liquids. Now in this part I am going to take the properties of the gases. So my dear student, the properties of gases are as: first property, the gases are highly compressible as compared to the solid and liquid. My dear students, this topic, properties of gases, is very important as compared to the solid and liquid, because the compressed gases are used in our daily life in so many ways and so many places and so many workable conditions. So you see here, the gases are highly compressible as compared to the solid and liquids. गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है, वो ज्यादा कंप्रेस की जा सकती है. इस प्रॉपर्टी के कारण this property is used in day to day life everywhere. See here, एग्जाम्पल बताता हूं आपको. एग्जाम्पल, सेकंड प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ये एलपीजी रोज सुनते हैं आप. व्हाट इज एलपीजी? एलपीजी इज यूज्ड इन आवर हाउसेस फॉर कुकिंग द फूड. एलपीजी सिलेंडर वी हैव इन आवर हाउसेस फॉर कुकिंग द फूड मटेरियल्स. दिस इज एलपीजी गैस. What is this LPG? Liquefied petroleum gas. Second example, compressed natural gas. Compressed natural gas CNG, इसके नाम से देखो, compressed natural gas CNG. What is CNG? You have heard so many times CNG is used in vehicles as a fuel. So in vehicles CNG is used as a fuel in place of diesel and petrol. The CNG, compressed natural gas है ये CNG. इसकी फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म ये है. इसकी फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म ये है. And it is used in vehicles as a fuel. Remember this. Fourth example, oxygen gas cylinder. Yeah, my dear students, you have heard in corona period shortage of oxygen gas cylinder. There was a huge shortage of oxygen gas cylinder in corona period. There are so many hospitals in which this gas was not available, and non-availability of this gas, so many patients have been suffered or had been suffered, and they lost their lives. ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ये हॉस्पिटल के अंदर दिए जाते हैं. इन सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस कंप्रेस्ड करके भरी जाती है और सप्लाई टू हॉस्पिटल. दीज सिलेंडर्स आर सप्लाइड टू हॉस्पिटल for the use of the patient for oxygen purposes. So fifth property, due to high compressibility, यानी इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है, इसके कारण ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम गैस का, वो कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर. बहुत सारी गैस एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस्ड यानी जबरदस्ती ठूस दी जाती है, कंप्रेस्ड कर दी जाती है, और फिर ये गैस ट्रांसपोर्टेड इजीली और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से भेजा जा सकता है.
देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी की इस गैस की। नहीं तो इतनी बड़ी गैस कैसे ले जाएं, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करें। सो दिस गैस कैन बी compressed. A huge gas can be compressed in a small cylinder and transported easily from one place to the other. This property is used in transportation also. Now, sixth property. Sixth property, my dear students, sixth property क्या है? Due to high speed, due to high speed of particle, due to high speed of particles and large space, large space between particles. Understand my point? Between particles. देखो ये दो गुण हैं पार्टिकल्स। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड की मूवमेंट बहुत हाई होती है गैसेस के अंदर, और लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल, और इस पार्टिकल के अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस ऑफ बिटवीन पार्टिकल, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी ना, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस, डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस वेरी फास्ट। यानी इन दो प्रॉपर्टी के कारण, हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल और लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल, diffusion can take place very fast. Diffusion can take place very fast. My dear student, this is a good property for diffusion, because diffusion is very necessary for the purpose of the daily use. Now, seventh property. What is seventh property? Particle can move freely. एक बात, पार्टिकल मूव कैन फ्रीली, गैसेज में ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। पार्टिकल मूव with a very high speed, with a very high speed, very high speed। एक ये बात होगी, क्या होगी? एक तो पार्टिकल मूव करते फ्रीली, और पार्टिकल मूव करते वेरी हाई स्पीड पर मूव करते, एंड दे हिट ईच अदर, और ये आपस में टकराते भी है। दे हिट ईच अदर, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, पार्टिकल विद ए वेरी हाई स्पीड मूव करते हैं, दे हिट ईच अदर एंड हिट दी walls, hit the walls of container। यहां लिखता है hit the walls of container, hit the walls of container, ये ऐसे आएगा इधर, the walls of container। so they exert pressure, they exert pressure on walls of container। जब एक बात बताइए आप, ये अलग है, यानी सेवंथ प्रॉपर्टी में क्या है? ये फ्रीली मूव करते हैं, बड़ी स्पीड से मूव करते हैं, और आपस में भी टकराते हैं, और वाल्स में जिसमें होते हैं ना, सिलेंडर में, सिलेंडर की वाल्स को भी टकराते हैं, और जब सिलेंडर की वाल्स को टकराते हैं तो वाल्स पर प्रेशर पड़ता है। जो कंटेनर पर जो प्रेशर होता है, हम नापते हैं कितना प्रेशर है, वो ड्यू टू द हीटिंग ऑफ दिस फ्रीली
of the particles. So this is the seventh property. My dear students, I have mentioned the seven properties of gaseous state. All the properties are very important. So and these properties are used in life, in everyday life. A cylinder, these things are very common. We should remember these properties. So there are seven properties. First, the gases are highly compressible as compared to the solid and liquid. This is the first property. Second example, liquefied petroleum gas. You can say liquefied petroleum LPG. Third example, compressed natural gas CNG is used in vehicles. Fourth example, oxygen gas cylinder is used in hospitals. Fifth, due to high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder. कितनी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत सारी गैस एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके भर दी जाती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इजी हो जाती है। इसी प्रकार से सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस वेरी फास्ट। ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी इसमें बड़ी काम करती है। सेवंथ, पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, पार्टिकल मूव विद a very high speed and they hit each other and hit the walls of the container also, and the pressure on the walls of the container is due to the hitting of these particles on the walls of the container. My dear students, these are seven properties and all the properties are very essential and very important, and I think this concept is clear to you. And in the last, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.